नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि पिछले संडे को मैंने कहा था कि संडेज वी विल डेडिकेट टू द थियरी क्वेश्चंस। हमारी एग्जाम के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण मार्क्स जो अलोकेट किए जाते हैं थियरी क्वेश्चंस के लिए, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा ट्रू और फॉल्स के लिए होता है। पिछले वाले थियरी सेशन में मैंने 3 चैप्टर कवर किए थे, विच वॉज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तीनों चैप्टर पे मिला के हमने सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस किए थे। आज सिर्फ 2 ही चैप्टर्स है, डेप्रीसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हालांकि इन 2 चैप्टर्स पे मैं 32 पूरे दांतों के जितने ट्रू और फॉल्स ले आए हूं, मतलब जिनके होंगे। हाँ, मतलब हर किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं होता है, पर तो मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलाव ही नियम है। तो खैर 32 ट्रू और फॉल्स और उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अगर हम लोग आज के सेशन में इसे खत्म नहीं कर पाए तो इसे हम लोग कल ही अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे थियरी क्वेश्चंस में ही। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। द फर्स्ट चैप्टर दैट विल फोकस अपॉन इज डेप्रीसिएशन। पहले ट्रू और फॉल्स पे फोकस करेंगे और उसके बाद हम लोग शॉर्ट नोट वाले आंसर्स पे चले जाएंगे। तो पहले जो ट्रू और फॉल्स है उसमें है डेप्रीसिएशन इज एन अमोर्टाइज्ड एक्सपेंस एंड द आंसर इज the given statement is completely false because amortization applies to intangibles. Write down, sorry. Write down, true. Depreciation is the part of depreciation is the part of total cost less the residual value charged to P&L over its useful life. Over its useful life. Next line. Accordingly, the capital expenditure on a depreciable asset is amortized in the form of depreciation is amortized in the form of depreciation, right? इसी स्पीड से हमको अगर आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो श्योरली आज ही सब खत्म करके निकलेंगे। नेक्स्ट वन, डेप्रीसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ अलोकेशन of the cost of fixed asset, a very clear and straight statement, and therefore the answer is true. Process of allocation of cost of fixed asset, right? Nahi, it is the process of allocating the depreciable value. है ना?
but technically they have given the answer as true. नहीं, मैं क्यों आपको दोनों साइड समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो आप डेप्रिशिएबल वैल्यू को स्प्रेड करते हो, बट टेक्निकली स्पीकिंग कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू को आप कहते हो कि इट इज अ डेप्रिशिएबल वैल्यू और नॉट। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, जरूरी थोड़ी कि हर बार रेसिडुअल वैल्यू रहेगी, एंड दैट्स व्हाई द गिवन स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज ट्रू। मैं दोनों साइड इसीलिए क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। Depreciation is allocated so as to charge an estimated proportion of the depreciable amount in each accounting period during the expected useful life of asset. During the expected useful life of asset. Next one, very interesting. Depreciable amount refers to the difference between historical cost and the market value of the asset. False, because it is the difference between what? Cost and residual value at the end of useful life. So answer is false. The depreciable amount of an asset the depreciable amount of an asset, I hope आप लोग जो बैठे हो अपने अपने घरों में, आप भी इन चीजों को लिख रहे हो। Depreciable amount of an asset refers to the historical cost less the estimated residual value at the end of its useful life. At the end of asset's useful life. कल का सेशन अचानक कैंसिल होने की वजह से बहुत लोगों को अचानक लगने लगा है कि आज भी शायद कैंसिल हो जाए। रहने दे भाई, बाद ही में देख लेंगे। खैर, depreciation cannot be provided in case of loss in a financial year. False. Why? Depreciation is a charge against profit and not a reserve. Right? False. Depreciation being a charge against profit depreciation being a charge against profit has to be provided, has to be provided whether the business has profit or loss, has profit or loss in a financial year. In a financial year. Next one. Providing depreciation ensures sufficient cash for asset replacement. Yes, depreciation do provide for replacement, but if you read the statement carefully, sufficient cash for asset replacement.
that thing changes the whole answer. यहां अगर दिया होता ensures the replacement of assets, my answer would have been true. बट क्योंकि सफिशिएंट कैश कहा हुआ है, नया असेट कितने में आएगा आपको थोड़ी पता है, राइट? आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग असेट की कॉस्ट को और उसकी स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करके कर रहे हो. द इन्फ्लेशनरी कंडीशंस विल चेंज द वैल्यू ऑफ न्यू असेट्स और नॉट, और इसी वजह से इट विल नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट कैश फॉर द रिप्लेसमेंट. हाँ, it will provide the funds for replacement, that is for sure. False. Even though charging depreciation does not involve a cash outflow, comma, in turn creates the funds for replacement. In turn creates the funds for replacement. Next point. However, providing depreciation alone does not necessarily ensure sufficient cash for replacement of asset especially in the rising prices conditions. You can write inflationary conditions in the rising prices conditions. G. So I would have given the answer as true, because one of the basic reason why we charge depreciation is for creating the funds for the replacement of assets, right? वो clearly दिया हुआ है, for calculating correct profits, for showing the correct value of the assets, and for replacement of assets or not. That is what is the purpose of charging depreciation. We are going to talk about in the short notes. पर क्योंकि इन्होंने कहा सफिशिएंट कैश, आपके नए असेट जितनी वैल्यू आपका एग्जिस्टिंग असेट कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा. Of course, that much of funds you are creating, but is it sufficient for purchasing the new asset? Now, if someone is replacing his car, old car का cost और उसका depreciation मिला के क्या new car के sufficient value से बनेगा? Obviously not. Reducing balance method for depreciation is followed to have uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together. That is the basic objective of this method. मतलब आपके स्ट्रेट लाइन मेथड और आपके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दोनों का अजम्पशन सेम है कि आपकी असेट इक्वली यूज होने वाली है, फिर भी हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस में ज्यादा डेप्रिसिएशन और स्ट्रेट लाइन मेथड में कम डेप्रिसिएशन इन इनिशियल ईयर क्यों चार्ज करते हैं? ताकि लैटर पार्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ में जब रिपेयर मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़े तब डेप्रिसिएशन का वैल्यू घट जाए. So to an extent, the charge over the period of time related to the asset being debited to P&L account will be uniform. To an extent, not exactly. It will not be exactly equated, but to a certain amount it will get equated or not. That's why the given statement will be considered as true. And the logic.
In the early periods of the useful life of fixed assets, the repair and maintenance expenses are reasonably lesser as the asset is new, as the asset is new, so the depreciation charged is higher. So the depreciation charged is higher. Next line. Whereas in the latter part of the useful life, in the latter part of the useful life, the repair and maintenance cost will increase continuously. इसीलिए इंटेंजिबल असेट्स पे हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो की जाती है और फिक्स्ड असेट्स जो टेंजिबल असेट्स होते हैं उस पे जनरली रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो की जाती है, क्योंकि इंटेंजिबल्स के केस में रिपेयर मेंटेनेंस का कॉस्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता है, राइट? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज क्या लिखा? will increase continuously, but we charge lesser depreciation. But we charge lesser depreciation. Last point. Thus, the depreciation and repair maintenance cost combined together are said to be uniform. Combined together are said to be uniform throughout the useful life of asset. Throughout the useful life of asset. Is the point right? Next one. Amortization refers to physical deterioration of intangible assets like goodwill, patents, copyrights. जो असेट खुद ही फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उनका फिजिकल डिटेरियोरेशन कैसे हो सकता है? हाँ, अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू द इंटेंजिबल असेट्स बट नॉट टू द फिजिकल डिटेरियोरेशन. सो आंसर इज फॉल्स. The amortization refers to reduction in economic value. The amortization refers to reduction in economic value or the economic deterioration or the economic deterioration of the intangible assets like goodwill, patents and copyrights. Like goodwill, patents and copyrights. Many people don't want to waste their Sunday mornings and that's why they are not attending it. And many people want to invest their Sunday mornings and that's why they are attending the session. So that's fine. It's the perspective, POV, point of view.
Depreciation accounting is the process of valuation and not allocation. And the answer is false. Why? Because under depreciation we do the allocation of cost and not the measurement or valuation of an asset. Right? Down. False. Depreciation accounting is the process of allocation Depreciation accounting is the process of allocation and not measurement or valuation. And not measurement or valuation. Depreciation is a non-cash and non-operating expense which is to be provided for if there are the profits. मैंने कहा था yes it is non-cash. पहला पार्ट अगर पढ़ो तो हमको लगता है ट्रू है, पर अल्टीमेटली आंसर फॉल्स हो जाएगा या नहीं? Because depreciation is a non-cash but operating expense. So on an overall basis, the answer will be considered as false. Depreciation is a non-cash expense but an operating one. Next point. Depreciation is a charge against profit. Depreciation is a charge against profit. Next point. Therefore, depreciation must be provided even if the business suffers the losses. Even if the business suffers the losses. Is right? Next point. There exists a difference between written down value method and diminishing balance method of depreciation. Of course, false. Write down. False. The written down value of an asset and the diminishing balance value of an asset refers to the book value or reduced value of the asset. The book value or the reduced value of the asset next point. Under the two methods given, the depreciation is charged on such reduced or book value. On such reduced or book value of the asset
comma, hence both these methods are same. Hence both these methods are same. Correct? Straight line method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repair and maintenance together. इसका हम लोग आंसर ऑलरेडी लिख चुके हैं फॉर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. वहीं पे मैंने कहा था रिपेयर, व्हाई वी शिफ्टेड टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाज दिस बेसिक रीजन कि आपके स्ट्रेट लाइन मेथड में साल दर साल का जो डिप्रिसिएशन है वो सेम होता है और रिपेयर का कॉस्ट बढ़ते रहता है. So total cost put together will keep on increasing and will not remain uniform. Is it right? No, you write false. Under this method, the depreciation remains same from one year to another. The depreciation remains same from one year to another, even though the repair and maintenance cost keep on rising. Even though the repair and maintenance cost keep on rising over the useful life of asset. Over the useful life of the asset. Next point. Accordingly, the total cost debited to P&L account will keep increasing and will not remain uniform. And will not remain uniform. Is it right? Next one. Providing depreciation in accounts reduces the amount of cash profits. Depreciation is a non-cash expense. False. Depreciation being a non-cash expense, of course, depreciation being a non-cash expense, comma, providing depreciation in accounts does not reduce, providing depreciation in the books of accounts does not reduce the cash profits. Does not reduce the cash profits. कितने हो गए? Write down. Sum of year digit method is an example of accelerated method of charging depreciation. And the answer is true. Accelerated depreciation मतलब क्या? The situations where you are charging more depreciation in initial years and lesser depreciation in latter years. That's why those methods are called as accelerated methods of, the methods of charging accelerated depreciation. दो methods. कौन सी? Reducing balance method and sum of digits method. Is it point right? Write down. True. More depreciation is charged in the initial years of useful life
of the asset comma therefore it is called as the accelerated method of charging depreciation. Is it right? Next, depreciation is a cash expenditure like normal expenses. नहीं, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, राइट? तो इसलिए 5 में से एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो ट्रिकी होगा, अदरवाइज 4 ऐसे होंगे जो सिंपल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिख सकते हो. मैं क्यों ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं, व्हाई एम आई ब्रिंगिंग दीज क्वेश्चंस, इज वी शुड हैव द हैबिट ऑफ डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. हम लोग न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा भी आता है, पर उसमें समय जाता है. थियरी क्वेश्चन, अब ये अगर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए मेरे सामने आए, I would hardly be writing it in 30 seconds. Read, process, write, retrieve. 30 seconds. And in those 30 seconds, if I am able to earn 2 marks, that is a good proposition, man. Right? That's why we are practicing it. Around false. Depreciation is a non-cash expenditure as it does not involve any cash outflow. Is it right? If the market value of the fixed asset is higher than its cost, then depreciation need not be provided. Why? Because depreciation is the allocation of depreciable value and not the market value. Alright? False. Depreciation needs to be provided as depreciation is the allocation of depreciable value and is not concerned with any fluctuations in the market value of the asset. अच्छा, हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हो सकते हैं जो आपके आईसीआई मॉड्यूल में छपे हो, या कई बार ऐसे हो सकता है कि एक भी इसमें का जो ट्रू फॉल्स या शॉर्ट नोट्स या जो भी हम लोग पिकअप कर रहे हैं वो आपके आईसीआई मॉड्यूल में हो ही ना. तो मेरा सजेशन ये है कि ये सेशंस तो आपको अटेंड करने ही, ऑफ कोर्स, but at the same time do not miss out on what? The ICI module. important है. ICI मॉड्यूल से भी आपको थियरी क्वेश्चंस रन थ्रू करने चाहिए. इनफैक्ट मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैसे भी आपको समय मिले आपने ICI मॉड्यूल के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एक जगह पे अक्यूमुलेट कर लेने चाहिए. ट्रू और फॉल्स, शॉर्ट नोट्स, वहीं से भले आप कॉपी पेस्ट करके लिखिए. फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि जब आपको एग्जाम के लिए, आपकी कल एग्जाम है और आज आपको थियरी क्वेश्चंस पढ़ने, 50 पन्ने पलटाने की जरूरत ही नहीं है. आप ही के द्वारा लिखे गए, आप ही के क्वेश्चन जब आप खुद पढ़ते हो तो आपकी स्पीड एकदम रॉकेट वाली होती है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है. हाँ, ऑफ कोर्स
अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी ना हो कि आप लिखे खुदा बाचे और खुदा भी आके पूछे बच्चे ये क्या लिखा है, राइट? हाँ, अदरवाइज यू विल बी एबल टू सर्वाइव वेल। मतलब मुझे ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कई सारी चीजें मेरे पास अलग से नोट्स के फॉर्म में लिख के रखा करता था जब मैं मेरी एग्जाम्स लिखा करता था। तो उस समय पे मुझे फायदा क्या होता था कि लास्ट मोमेंट पे मैं 3 बार 4 बार वो पढ़ लिया करता था। जस्ट इमेजिन आपका पेपर 2 बजे है, 1:45 इज द टाइम टू स्टार्ट। इवन दो यू स्टार्ट एट लेट्स से 8:30 और 9 o'clock इन द मॉर्निंग, आपके थियरी क्वेश्चंस 9 बजे से लेके 12 बजे तक अगर 3 घंटे में अगर आपको पढ़ना है, और अगर आपने 200 पन्ने की बुक लिख के रखी हुई है, 200 पन्ने भरे हुए हैं आपके, आप कम से कम 2 बार कंप्लीट कर पाओगे क्योंकि आपने लिखा हुआ है। और अगर 2 बार आपने अपने ही लिखे हुए शब्द पढ़े हैं तो एग्जाम में ये 25 आपके कैश मार्क बनने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही हम लोग नॉन कैश एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये मैंने जानबूझ के लाया है क्योंकि इसी बात पे आप कई बार एग्जाम में कैलकुलेशंस में मिस्टेक करते हो। द एक्सप्रेशंस depreciation is to be charged at 10% and 10% per annum on furniture carry the same meaning. Answer is false. क्योंकि in the first case it is flat 10%, write off 10%, and in the second case it is on time proportion basis. Yes or no? Write down. मैं बहुत क्लियरली, मतलब ये क्वेश्चन जब मुझे दिखा तो आई कैटेगरिकली पिक्ड इट because this is which is important for your numericals as well. False. The expression depreciation is to be charged at 10% and 10% per annum do not carry the same meaning. Do not carry the same meaning. Depreciation at 10% means charge depreciation without reference to time. थोड़ा सा इंप्रोवाइज करते हैं, कॉमा, that is even if the asset is available, even if the asset is available for part of the year, comma, depreciation will be at 10% off. Depreciation will be at 10% off the reference value. रेफरेंस वैल्यू क्यों लिखवा रहा हूं मैं? हाँ, हो सकता है आप 10% ऑफ कॉस्ट चार्ज करो या हो सकता है आप 10% ऑफ बुक वैल्यू चार्ज करो। नेक्स्ट लाइन, वेयर एज depreciation at 10% per annum, depreciation at 10% per annum means charge depreciation with reference of time. Charge depreciation with reference of time, comma, that is, if furniture was purchased 6 months prior the year end,
if furniture was purchased 6 months prior the year end, comma, depreciation will be charged for only those 6 months. Depreciation will be charged only for those 6 months. देखो, ट्रू और फॉल्स में हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हम लोग एक या दो सेंटेंसेस में हमारे आंसर को खत्म कर दें. हालांकि कुछ कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन कंपलसरी हो जाता है, और इसीलिए मैंने इसको एलाबोरेटिवली आपको लिखवा के दिया. राइट, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा इंप्रोवाइज करते हैं इस पे. तो मेरे हिसाब से डिप्रिसिएशन के क्वेश्चंस यहां खत्म हो गए. अच्छा, एक सजेशन कि आप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप वो फाइल डाउनलोड करके अपने पास रख रहे हो, बट मेरा सजेशन ये है कि जितने भी आपने अब तक के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से फाइल्स डाउनलोड की हैं, उन सबके प्रिंटआउट्स भी अपने पास रखिए. और वो जिस भी बुक में आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर ये थियरी के क्वेश्चंस लिख रहे हो, वहां उन्हें अटैच करके रखिए, क्योंकि अदरवाइज होगा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, और सॉल्यूशन का पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं. राइट, सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स. मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके बारे में नॉर्मली बात नहीं करनी चाहिए, पर मैं जानबूझ के बात करता हूं, क्योंकि एग्जाम के समय हम लोग एक अलग स्ट्रेस में होते हैं, और वो स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना पहले से ज्यादा जरूरी है. राइट, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं. अ प्रॉमिसरी नोट कैन बी मेड पेएबल टू द बेयरर. पहला ही स्टेटमेंट पूरी तरह से झूठ बात कर रही है. क्यों? बिकॉज ओनली आरबीआई कैन इश्यू द बेयरर प्रॉमिसरी नोट और नॉट. Yes, write down false. A promissory note cannot be made payable to the bearer, comma, as only RBI can issue the bearer promissory notes, next point, accordingly a promissory note can be issued payable to or to the order of a certain person. सही जा रहे हैं हम लोग? जो लोग घर में बैठे हैं वो भी समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है. नो कैंसिलेशन एंट्री. अब बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड. तो इसे आप क्लियरली इजीली समझ पाओगे. नो कैंसिलेशन एंट्री इज रिक्वायर्ड व्हेन अ बिल इज रिन्यूड. False, because unless and until you cancel the original bill, old bill, you cannot renew it. False. When the bill is renewed, the entries are passed first for cancellation of the earlier bill, for the accounting of new bill. For the accounting of new bill.
right? Next, at the time of renewal of bill, interest account is debited in the books of drawee. Interest account is debited in the books of drawee. Yes or no? Of course, because you are renewing it, so the drawer will be charging the interest. Interest is the expense of the drawee, so interest will be debited by the drawee. True. At the time of renewal of bill, the interest account is debited in the books of drawee. The interest account is debited in the books of drawee as it represents the expense for the drawee. The expense for the drawee. पानी दे रहे मेरे को. Is right? Of course, false. Income होता है ना बेटा. Income will be credited ना. Debited बोला है ना. इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Promissory note requires acceptance. Clear false, क्योंकि promissory note is made by the promisor himself or not, and therefore it does not require the acceptance. False. The promissory note does not require the acceptance as it is a valuable instrument and drawn by the maker himself and drawn by the promisor himself. Drawn by the promisor himself is a valuable instrument and drawn by the promisor himself. Next point. ये जबरदस्ती में जोड़ा है मैंने. A bill of exchange, however, requires the acceptance. थ्योरी क्वेश्चंस के लिए हमें यही प्रोसेस कंटिन्यू करनी है ना, है ना? वी आर गोइंग फाइन फॉर एवरीवन, राइट? ऑनलाइन तुम लोगों के लिए भी ठीक चल रहा है सब? हाँ. थियरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थियरी लिख के निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है. सिर्फ पढ़ते रहने के बजाय सर हमें भी थोड़ा सा ऐसे अलग ही लग रहा है कि हम लोग अकाउंट्स में भी इतनी थियरी लिख सकते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स और फाउंडेशन के अकाउंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. ओके. द टर्म ऑफ बिल आफ्टर डेट commences from the date of acceptance of the bill, but the term of bill after sight commences from the date of drawing the bill. उल्टा सुल्टा लिख दिया ना, बस उतना ही लिखने का. फॉल्स, तुमने उल्टा सुल्टा लिखा है. फॉल्स. The bill after date, sorry, the liability in bill after date. सिर्फ वो एरो मार्क करके लाइबिलिटी लिखो ना. The liability in bill after date starts from the date of bill and therefore the term of bill will commence from
the date of bill next point, whereas for a bill after sight the liability starts from the date of acceptance and so will be its term. Right? Next, in case of all bills of exchange, 3 days of grace are added to the due date to arrive at the date of maturity. False? अगर ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट हुआ तो ऑफ कोर्स there is no question of calculating the due date. Then where is the question of grace days? हाँ, head down, false. बहुत ही होशियार हो तुम लोग. गुड. हाँ, बस ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, उतना ही था. In case of all bills of exchange, other than those payable on demand, ऑनलाइन वाले जब रिवर्ट करते ना, मुझे बड़ा ऐसे अंदर से गुड वाला फीलिंग आता है. हाँ, मतलब सिर्फ चालू नहीं करके रखा है इन्होंने, बट वो पढ़ाई भी कर रहे हैं. मतलब गुड, सीरियसली गुड, कीप इट अप. हाँ, other than payable or those payable on demand, comma, 3 grace days will be available to arrive at the date of maturity. To arrive at the date of maturity. वो शुरुआत में जो फंबल हुआ था ना, दैट इज बेसिकली वो रात को सोते सोते बंदा काम कंप्लीट करके सोए ना, तो ऐसे होते हैं. नेक्स्ट, rebate on retirement of bill is an expense for drawer and income for the drawee. True? Of course. हाँ, लिखो ना फिर. सुरेश अर्जेंट चाहा. हाँ, रिबेट ऑन रिटायरमेंट ऑफ बिल इज एक्सपेंस. फॉल्स क्यों लिखा? नो नो, ट्रू इट इज. ट्रू. हाँ, ट्रू ही लिखना है. रिबेट ऑन रिटायरमेंट ऑफ बिल. हाँ, ट्रू. राइट डाउन. इग्नोर दिस इज नॉट देयर. हाँ, rebate on retirement of bill is an allowance by the drawer therefore it is an expense for the drawer and income for the drawee. Expense for the drawer and income for the drawee. Alright? वो कुछ तो ड्रास्टिकली गलत हुआ. In case of public holiday, the due date of the bill falls on the next working date. In case of public holiday, it is previous working date.
false. According to the Negotiable Instruments Act, पता तो चले ना, हम लॉ भी पढ़ के आए। हाँ, इस बार है तुमको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हाँ, अकॉर्डिंग टू द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, in case of a public holiday, the due date of the bill falls on previous working day. Falls on previous working date. Is it right? हाँ, लिख सकते हैं। However, in case of emergency holiday. हाँ, ठीक है ना? In case of emergency holiday, it is a next working date. That is also correct answer. Justification in both the cases will be considered as correct. Next, when bill is endorsed or discounted, no entry is passed in the books of drawer. Lab bhai saab. तो ड्रॉवर ऐसा जताएगा कि बिल मेरे पास ही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हालांकि दे दिया नहीं ना, नहीं, फॉल्स. When bill is endorsed or discounted, $25 फॉल्स. हाँ बेटा, ये झूठ बात ही ज्यादा करते हैं. हाँ. अच्छा, वो 25वां क्वेश्चन. अच्छा, आगे के क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग? भाई इतने फास्ट, सही है. बेटा, अपने को सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं बताना है, उसका आधा मार्क मिलता है. जस्टिफिकेशन को 1.5 होता है, राइट? हाँ, हाँ, पता है, मेरे को पता है. हाँ, डराने तो दे. कमाल कर रहा है यार तू. पूरा आंसर गलत माना जाएगा. अगर आपने ट्रू फॉल्स लिखा और नीचे जस्टिफिकेशन अपोजिट लिखा या गलत लिख दिया, देन पूरे मार्क्स जाएंगे. सिंपल टर्म है ना भाई. अगर ट्रू लिखा है तो वो स्टेटमेंट वापस छाप के आ जाओ, कम से कम एक तो पक्का है. अगर जस्टिफिकेशन ठीक से नहीं आ रही है तो, और अगर फॉल्स है, जस्टिफिकेशन ठीक से समझ में नहीं आ रही है, उसका उल्टा कर दो. एक तो पक्का ही है, राइट? जस्टिफिकेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, राइट? हाँ, ये सही था ना. हाँ. When bill is endorsed or discounted, no entry is passed in the books of draw V. However, the drawer need to account for the same. However, the drawer need to account for the same. Clear है? है ना? Next, when the bill is honored on the due date, the drawee credits the bills payable in his books. When bill is honored on due date, the drawee credits the bills payable account in his books. When the bill is honored on the due date, the drawee will debit the bills payable account the drawee debits the bills payable account
as the rule is credit when the amount is payable, debit when the amount is paid. Credit when the amount is payable, debit when the amount is paid. बट टेक्निकली देखा जाए तो इसकी ट्रांसक्रिप्ट अगर दे दी होती आंसर्स की तो आपने वर्बेटिम समझने की कोशिश की होती। मैं क्लास में क्यों डिस्कस करता हूं, कई सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो डिस्कशन के लायक के होते हैं, और दूसरा कई बार ऐसे लगता है कि आंसर इनसफिशिएंट है, उसको इंप्रोवाइज करना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई आई प्रिफर टू डिस्कस दिस ऑल इन द क्लास। नहीं तो मेरे लिए बड़ा सिंपल था, क्वेश्चंस आंसर शेयर ऑन द ग्रुप, विषय ओवर। This was the simplest thing I could have done for the theory questions or not. Making a separate booklet, theory questions. It was simple for me. But I deliberately avoided it and tried to present the lectures on that separately. In case of dishonor of bill, noting charges are initially paid by drawee. Noting charges are always paid by the holder in due course. Drawer नहीं। अगर आप लिख के आओगे पेड बाय ड्रॉवर तो आपका जस्टिफिकेशन गलत हो जाएगा। दोज आर पेड बाय whom? The holder in due course. Write down false. Even though the noting charges are the expense of the drawee, comma, but those are first paid by the holder in due course. The holder in due course. Is it right? Next, the bill is treated as dishonored in case of insolvency of the drawee who pays only 75% from his estate. Unless and until a bill is fully honored, it is always considered as dishonored. Right? Down. True. The bill is treated as dishonored in case of insolvency of the drawee as he would fail to pay on the date of maturity. On the date of maturity. Right? The next one, ये क्या लिखवाया? कब पे करेगा? कब पे करेगा? इंसॉल्वेंट हुआ कब पे करेगा? तो डेट ऑफ मैच्योरिटी पे कर पाएगा क्या? तो डेट ऑफ मैच्योरिटी पे डिसऑनर ही होगा या नहीं? राइट? मतलब ऐसा तो है नहीं कि आज इंसॉल्वेंट हुआ और कल सेटलमेंट हो गई। राइट? The insolvency would lead to liquidation of assets, and liquidation of assets would lead to delay in the payment, and that's the reason will be considered as dishonored. इसीलिए जस्टिफिकेशन में भी क्या लिखा? ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ही विल फेल टू पे। राइट? हमने ऐसा नहीं लिखा कि ही फेल्स टू पे द अमाउंट।
वो तो 75% दे रहा है ना, बट जिस दिन मैच्योर हो रहा है बिल उस दिन पे नहीं दे रहा है, तो उस दिन तो डिसऑनर हुआ है नहीं, और उस दिन तुमको रिक्वेस्ट भी नहीं की उसने कि भाई रिन्यू कर दो, कर भी नहीं सकता रिक्वेस्ट, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. द मोमेंट इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट विल बी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सो रिन्यूअल तो हो ही नहीं सकता है, दैट मीन्स इट विल बी डिसऑनर ओनली. नेक्स्ट, फॉर ड्रॉइंग एन अकोमोडेशन बिल, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद ये समझ ना आए, तो आप चुपचाप जस्टिफिकेशन लिख लो. फॉर ड्रॉइंग एन अकोमोडेशन बिल सम वैल्यूएबल कंसिडरेशन मस्ट पास बिटवीन द टू पार्टीज, आंसर इज फॉल्स. फॉर ड्रॉइंग एन अकोमोडेशन बिल consideration need not pass between the two parties. Consideration need not pass between the two parties, comma, as such bills are drawn and accepted, such bills are drawn and accepted for the mutual financial accommodation. For the mutual financial accommodation of the parties. जो हमारे एकत्वम के एनुअल बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अकोमोडेशन का कंसेप्ट बस 4 दिन दूर है, 3 दिन दूर है, हाँ 3 दिन दूर, हाँ मी पुन्हा येईन. So a promissory note is an unconditional order in writing given by creditor to the debtor. Given by creditor to debtor. अनकंडीशनल ऑर्डर तक सब सही चल रहा था, पर गिवन बाय डेटर ने, सॉरी क्रेडिटर टू अ डेटर ने गुड़ गोबर कर दिया, राइट. सो आंसर इज फॉल्स बिकॉज इट इज गिवन बाय डेटर टू हिज क्रेडिटर. प्रोमिसरी नोट जो लाइबल है वो लिखता है जिसकी तरफ लाइबल है उसको, या नहीं, हाँ फॉल्स. देखो क्या होता है ना कि ये जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द इतना खराबा करते हैं एग्जाम में. जो आप 10 दिशा में सोच रहे होते हो ना अचानक से, सर 10 दिशा कैसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर उनके नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ऐसा कुछ तो होता है ना, हाँ, और उसके बाद नभ और पाताल, इस तरह से वो 10 दिशाएं होती हैं. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज 10 दिशाओं में सोच रहे हैं, राइट. ये जब आप 10 दिशाओं में एक साथ सोच रहे होते हो ना, उस समय पे लिटरली आप ओवर थिंकिंग करके आते हो और सही लिखते लिखते भी गलत करके आते हो. इसलिए जितना लाइन में लिखा है सिर्फ उतना पढ़ना है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं करना है, राइट. हाँ, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस given in writing is conditional acceptance valid for bill of exchange? Yes. हाँ, unconditional promise in writing, given in writing by a debtor into bracket maker to a creditor by a debtor into bracket maker to a creditor into bracket payee. Is it right? Right?
हाँ, अगर सिर्फ इतना दिया होता दैट प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग, ट्रू, वहां पे खत्म कर देना चाहिए था, तो सत्यवचन था। और आगे इन्होंने जो क्रेडिटर टू डेटर किया है ना, झूठ बात कर रहे हैं। ड्रॉई एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन इन बिल्स रिसीवेबल। At the time of drawing the bill, it can never be the same. Drawee and payee can become the same person only in the course of endorsement or not. मतलब if and but लग गए या नहीं, अगर जरूरत ही नहीं है, जो प्लेन मीनिंग है उस पर फोकस करेंगे, एंड दैट इज व्हाट, फॉल्स। इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, in a bill of exchange, a drawer and payee can be the same person. A drawer and payee can be the same person. But not the drawee and payee. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इस क्वेश्चन में इन्होंने स्पेसिफिकली बिल्स रिसीवेबल के केस में कहा, ड्रॉई के लिए वो बिल्स पेएबल हो जाता है, राइट? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल का स्पेसिफिक रेफरेंस है, तो ड्रॉई एंड पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन। हाँ, ड्रॉवर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन। नेक्स्ट वन, अच्छा लास्ट है, वाह, फुल कंट्रोल रखा हुआ है। डेज ऑफ ग्रेस are added to the date of maturity of bill to arrive at the due date. To arrive at the maturity date, you add the grace days, not to arrive at the due date. Due date is what? When the term completes, it is called as due date. When you add the 3 days, it becomes the maturity date. So answer is false. The days of grace are added to the due date to arrive at the date of maturity. To arrive at the date of maturity. Next point within that. The due date can be arrived at by adding term of bill to the date of bill or date of acceptance. To the date of bill or date of acceptance. Is it right? तो ट्रू और फॉल्स को यहां पे रोक देते हैं और आगे चलते हैं विद द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। जितने कंप्लीट कर पाएंगे उतने कंप्लीट कर लेंगे, ऑलराइट? हाँ जी, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? राइट द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन। राइट डाउन। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स the reduction in the value of assets over its useful life in accordance with
The accounting policies framed by the management. The accounting policies framed by the management. Next point. Depreciation therefore represents a systematic allocation of the depreciable value of the asset over its useful life. Next point. The objectives of providing depreciation include below that, short Roman 1, to arrive at the correct profitability of the business. To arrive at the correct profitability of the business. Next point. By charging the depreciation, the correct value of the assets can be determined and hence the true financial position of the business. The true financial position of the business. Next. Depreciation being a non-cash expense, comma, it creates the funds to replace the asset. It creates the funds to replace the asset. Next. By charging the depreciation, it can be allocated to the production cost
and so the correct cost of production for the goods or services, is right. What are the causes of providing depreciation? किस वजह से हम लोग depreciation charge करते हैं? Wear and tear, efflux of time, change in taste, fashion, technology, accidents, and नहीं बेटा, वो तो अकाउंटिंग का पर्पस हो गया ना, वो तो लिख दिया हमने ऑब्जेक्टिव्स में. किन वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और किस वजह से डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं. ऑब्जेक्टिव्स एंड अकाउंटिंग इज वन एंड द सेम थिंग. कॉजेस एंड रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज वन एंड द सेम थिंग, राइट. नहीं, ये लिखो, पॉइंट टू रिमेंबर. Why account for depreciation and what are objectives of charging depreciation is same. Why account for depreciation and objectives for charging depreciation is same. एक शॉर्ट नोट के लिए कितना पन्ना लिखना है? Kindly watch the previous session on theory. Go, watch. Next one, write down. The causes of, दूसरा अलग पॉइंट है. The causes of charging depreciation and why to charge depreciation is same. Is it right? Now, what are the causes of providing depreciation? The value of asset decreases. ये मैंने ICI मॉड्यूल में से उठाया है. हाँ, सच में उठाया है. Value of assets decreases with the passage of time. With the passage of time due to the following reasons. Due to the following reasons. Are that wear and tear of the assets due to its usage in the business. Wear and tear of the assets due to its usage in the business. Next, efflux or passage of time efflux or passage of time even when the asset is not used. Even if asset is not used. Next, obsolescence. Obsolescence is nothing but outdatedness.
obsolescence due to technological or other changes. Now, what can be other changes? Changes in taste and fashion, changes in demand for the product, that can be considered as other changes. Decrease in market value, that is nothing but what you call as impairment of assets. Decrease in market value. In fact, nowadays we account for the same in the form of permanent reduction. पर ये उसके बारे में बात नहीं चल रही है, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ द यूज्ड एसेट और नॉट, उसके लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है, राइट? एंड लास्ट वन, डिप्लीशन इन केस ऑफ वेस्टिंग असेट्स. Depletion in case of wasting assets like mines and other natural mineral reserves. Like mines and other natural mineral reserves. Is it right? Specify the factors in measurement of depreciation. I think this is last on depreciation, right? Depreciation की 4 क्वेश्चन है, बहुत पढ़ाई करके आए बे, इतनी तैयारी तो मैंने भी नहीं की थी. हाँ, स्पेसिफाई द फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन. क्या फैक्टर्स होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू. करेक्ट? The depreciation on the assets can be calculated. The depreciation on the assets can be calculated considering the following factors. And that, number 1, cost of assets into bracket paid or payable. Cost of assets into bracket paid or payable, bracket close, comma, including the expenses for installations, comma, commissioning, comma, trial run, etc. These are nothing but what? Expenses to make the asset ready to use. Also becomes part and parcel of the cost of asset or not? Therefore, trial run, etc. Next, number 2, estimated useful life of the asset. Estimated useful life of asset which can be in terms of time or utility comma, in units or hours. In units or hours. Next, estimated bhangar value, scrap value. Estimated scrap value
if any, which is the salvage value or residual value, which is the salvage value or residual value at the end of useful life of asset. At the end of useful life of asset. Right? अगला वाला जो है ये बेसिकली 5 क्वेश्चंस है, पांचों मेथड के शॉर्ट नोट्स. इनफैक्ट इसके लिए आप चाहो तो मैं नोट लिखवा सकता हूं, बट इसके लिए इट हैज टू बी फ्रॉम यू ओनली. वी कैन राइट इट, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट फ्रंट, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अबाउट दीज ऑल थिंग्स. व्हाई, क्या क्या कवर करना है. व्हाट आई विल डू इज फॉर दीज क्वेश्चंस आई विल ओनली गिव यू द हिंट पॉइंट्स what you are supposed to include in that. Number 1, what is the meaning of that particular method? Straight line method, wherein you charge equal depreciation. Reducing balance method, when the depreciation reduces. Sum of digit based on mathematical calculation. Depletion and machinery method based on actual production. Alright. Second, you have to include what are the kind of assets for which you follow the method. Type of assets. First is meaning, second is type of asset for which you calculate the depreciation. Third, what will be the amount of depreciation? ऐसा लिखने के बजाय ऐसा लिखो, how the amount of depreciation will be allocated. Straight line method में equally, reducing balance method में higher initially and lower later, sum of digit method में reducing with the same proportion, depletion machinery method में fluctuating. How will the amount be allocated? चौथा, how do you calculate depreciation? That is the calculation of annual depreciation और उसका formula. These are the 5 things which you are mandatorily required to include in your answer. There is no 5 points. मैंने वो भी कहा. और उसका फॉर्मूला, वॉट एवर आर द एप्लीकेबल फॉर्मूलाज इन दैट. लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इज द एनुअल डेप्रिसिएशन, और दूसरा फॉर्मूला वहीं पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला क्या, 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट होल मल्टीप्लाइड बाय 100, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का. Sum of digit method, cost minus scrap divided by sum of digits multiplied by remaining useful life plus 1. Sum of digits is equal to n into bracket n plus 1 divided by 2. Machine hour method में cost minus scrap value divided by useful life into actual output. Useful life being number of units or number of hours. Same thing applies to depletion method also. इस तरह से आपको उसका फॉर्मूला भी इंक्लूड करना जरूरी है. जो भी एप्लीकेबल फॉर्मूले हैं वो. Is it point right? तो ग्राफ ड्रॉ करने की आवश्यकता एज सच नहीं है. अगर आपके पास समय है भर दो पन्ना. राइट? क्यों मैं ग्राफ के लिए मना कर रहा हूं? क्योंकि ग्राफ कैन नॉट बी गिवन अनलेस एंड अंटिल यू गिव द डेटा एंड एक्सप्लेनेशन टू दैट. इसीलिए जनरली ग्राफ ड्रॉ करना नहीं चाहिए. हालांकि आप लिख सकते हो पिक्टोरियली, इट कैन बी प्रेजेंटेड एज दिस. So write that point as well, add it, pictorial presentation. Straight line, reducing balance, sum of digit, machine hour, depletion. बराबर? 5 तरह के जो ग्राफ होते हैं. स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू y एंड पैरेलल टू x. रिड्यूसिंग बैलेंस में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. सम ऑफ डिजिट में लीनियर स्लोपिंग लाइन. In case of machine hour production mileage and depletion method fluctuating. Is it right? So इस तरह से आपको इनके आंसर्स इंक्लूड करने चाहिए. Right?
Distinguish between bills of exchange and promissory note, again a point which we have already covered in the classes. अगर जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं और पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो दिस इज सिंपल टेबल विच यू हैव टू इंक्लूड. मतलब मैंने हाईलाइटिंग पॉइंट इंक्लूड किए वापस से. आई हैव नॉट रिटन द होल आंसर इन दिस. राइट, अब आ जाते हैं हम लोग आखिरी के 3 शॉर्ट नोट्स पे. अकोमोडेशन बिल्स, रिन्यूअल ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्ज. खत्म कर ही देते हैं ना, हो ही रहा है तो फिर खत्म करने में क्या ही दिक्कत है. 3 शॉर्ट नोट्स बचे हैं यार, खत्म करके निकलते हैं. राइट, हार्डली 10 मिनट. नहीं नहीं नहीं, लिखो चलो. अकोमोडेशन बिल, क्या पता है तेरे को उसके बारे में? लिख. एक तो देख, मैं वो पेपर से चिपका 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 के लिखा हूं पूरा. वो कहां कहां से शब्द ढूंढे होंगे दोस्त, सोचो. हाँ, ऑफ कोर्स कॉपी पेस्ट किया है मैंने. इतना टाइप करूंगा क्या, पागल है क्या? हाँ, कुछ चीजें ना जान पे आती हैं और कुछ जगहों पे मैं बहुत डिलिबरेटली मेटिकुलसली हर पॉइंट टू पॉइंट लिखता हूं. वो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कंसेप्ट दैट आई एम राइटिंग. अकोमोडेशन बिल, राइट डाउन. अकोमोडेशन बिल्स are the bills drawn and accepted accommodation bills are the bill drawn and accepted for the mutual financial requirement, for the mutual financial requirements of the drawer and drawee, of the drawer and drawee. No consideration is supplied. Next point. No consideration is supplied by the drawer to the drawee that is, it is not backed by a trade transaction. That is, it is not backed by a trade transaction. By a trade transaction. The parties involved in this kind of bill are generally related to each other. Are generally related to each other. Next point. There can be only one bill drawn on another person, or both the parties draw a bill on each other. Or both the parties draw a bill on each other. The accommodation bills, next point, the accommodation bills will generally be discounted with the bank, comma, the proceeds and discounts
are shared between the parties and on maturity the funds are returned to the bank. And on maturity, the funds are returned to the bank. हाँ जी, नहीं है, होती नहीं है, छोड़ दे वो सब चीज़ों के पीछे भी नहीं पड़ेगा, वो जब मैं आएगा ना तब बताएगा. हाँ, हो गया, क्लियर है. हाँ, रिन्यूअल ऑफ बिल. Sometimes the drawee of the bill realizes that is unable to discharge the bill on due date, and therefore requests the drawer to cancel the existing bill and draw a new one in replacement of the same, comma, it is renewal of bill. Next point. The drawer may agree upon the same comma, however, would generally charge an interest for the extended credit period. Last point. On renewal of the bill, the drawee may make the partial payment and accept a new bill. The drawee may make the partial payment and accept the new bill for the balance outstanding. Right? Noting charges, the last one. Now this is to be written in a technical form. Technically क्या होता है?
अगर बिल डिसऑनर हुआ या फिर डिसऑनर होने वाला है तो आप नोटरी पब्लिक के पास जाते हो. नोटरी पब्लिक ट्राइज रिकवरिंग द सेम टू कंफर्म कि हां सच में डिसऑनर हो रहा है. And after that, the notary public registers the dishonor. And for this service, he will be charging that fees. That's why those are called as noting charges. Write down. When a bill is presented for payment and when the bill is presented for payment and the drawee fails to discharge his liability, that is, the bill gets dishonored. Next point. In order to keep the legal proof, of dishonor, the bill gets noted by the notary public. The bill gets noted by the notary public. Next point. Such notary services are provided by the notary public against a fees. Such notary services are provided by the notary public against a fees called as noting charges. Add a point there. Next point. Noting charges are paid by the holder in due course but is the expense of the drawee. Or acceptor. अब वो नोटरी पब्लिक क्या नोटिंग करवाता है, दोज आर द पॉइंट्स. नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा. सो दिस इज अबाउट द टू टॉपिक्स दैट वी हैव फिनिश्ड टुडे, दैट इज depreciation and bills of exchange. My next theory session is dedicated to 3 topics: capital and revenue expenditure, contingent asset liabilities and provisions, and concepts of accounting. Means we will be focusing on chapter 1. Very important, क्योंकि chapter 1 alone will be carrying around 5 to 8 marks only in theory. All right. So next session, capital revenue, contingent asset liability, and the concept of the different concepts of accounting. All right. So I'll stop by here. We'll meet tomorrow for the chapter that we are continuing with, that is depreciation. Thank you very much.